Okay, students. So today let us move on to a new part of the topic. That is nothing but inverse of a matrix. Okay. So please note down the heading inverse of a matrix. Now in this, let us first write down the definition. When I say inverse of a matrix, how it is defined, what does it mean? Let us see by defining it. Inverse of a matrix का definition लिखते हैं. Write down under this. Just write down this heading first, everyone. Write down. If definition लिखते, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices of same order, very important, underline this word, same order. If A and B are two matrices of same order such that A into B is equal to B into A into B is equal to B into A is equal to identity matrix. A and B are two matrices of same order satisfying the condition such that A into B is equal to B into A is equal to I. मतलब A into B को multiply करो या B into A को multiply करो, then we are getting an identity matrix. Okay, then देखो आप, then A and B are called as inverse of each other, are called as inverse of each other. A and B are called as inverse of each other. ठीक है, write down इसके they are called as inverse of each other. B is called as here, ऐसा लिखो, here B is called as inverse of A. B is called as inverse of A. ब्रैकेट में आप लिख लो B is equal to A inverse. B को हम डिनोट करेंगे A inverse से. Here B is called as inverse of A. They are inverse of each other. B is called as inverse of A and A is called as inverse of B. Both is possible. Okay. B is called as inverse of A and it is denoted by B is equal to A inverse. Okay. Now what will happen? B will be replaced by the notation A inverse. Please see A inverse का notation ध्यान से देखो, पहले मैं लिखता हूँ, do not write down this. A to the power -1 ऐसा A inverse का notation है. Please remember A to the power -1 does not mean that this is equal to 1 by A. No, not at all. A inverse not equal to 1 by A, ऐसा नहीं लिखेंगे हम. A inverse का ये correct notation है. It is written this way only. Okay. A inverse. So B is called as inverse of A. So what I was saying is B को हम A inverse से replace कर देंगे. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, A into B is equal to B into A is equal to I ना. तो B को A inverse से replace कर देंगे. तो लिखो क्या मिलेगा, therefore A into A inverse is equal to, ठीक है, A inverse into A and both of them are equal to identity matrix. A into A inverse is equal to A inverse into A and they both are equal to I. Please put a box over this. इसको एक box में डाल दो. Very important part of the topic. So this is the definition of a inverse of a matrix.
if A and B are two matrices of same order such that A into B is equal to B into A is equal to Y, then A and B are called as inverse of each other. One more thing you need to remember, that A and B are two specifically square matrices. ठीक है, ऐसा लिख लो आप, if A and B are two square matrices, ये बहुत जरूरी है यहाँ, are two square matrices, ऐसा लिख लो आप, of same order. स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है. ओके, आई टेल यू व्हाई. इफ ए एंड बी, क्योंकि इनवर्स है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है. So please just note down, if A and B are two square matrices of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I, then A and B are called as inverse of each other, and B is called as inverse of A. It is written as B is equal to A inverse. और क्या हमें याद रखना है, that A into A inverse is equal to A inverse into A is always equal to identity matrix. Okay, now let us see the working rule for finding out A inverse. अभी हम working rule देखते हैं A inverse find करने के लिए. Okay, तो चलो write down on the next line. This was the definition. What is inverse of a matrix? Inverse of a square matrix होता है always. Whenever we are finding out inverse, it is always for a square matrix. Please remember. Okay, now write down working rule. Working rule to find A inverse. Working rule to find A inverse. A inverse find करने के लिए हम working rule लिखेंगे. Okay, write down step number 1. First step लिखो. Step number 1, write down. Consider given matrix. Consider given matrix as capital A. Obviously, जो given matrix होगा that will be a square matrix. Understood है? We need not to worry. Question ही वैसा आएगा. Consider the given matrix as A and find determinant of A. And find determinant of A. On the next line, continuation under the same point. Okay, find determinant of A. लिखो A inverse exists. A inverse exists if and only if. IFF is short form for if and only if. A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0. A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0. This is a very important point. A inverse exist होगा, पर कब होगा, जब determinant of A का value will be not equal to 0. Means in short, matrix A given should be a non-singular matrix. We know the meaning of non-singular matrix. Determinant का value is not equal to 0. ठीक है? So I repeat once again. Consider the given matrix as capital A when we solve the problem. Then we find out determinant of A का value. A inverse exist होगा if and only if determinant of A is not equal to 0. ठीक है? अभी ये step number 1 हो गया. अभी step number 2 लिखो. Second step. अच्छा, अभी हमें जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, अब जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2. ओके, राइट डाउन. इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा लिखो, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, what we do if A inverse exists, there are 3 options. First option लिखो, ऐसा लिखो, if A inverse exists, first one,
we use A into A inverse is equal to I. We use A into A inverse is equal to I. सामने थोड़ा जगह छोड़ दो, leave a space, write down what is A into A inverse is equal to I. Second, you write down, we use A inverse into A is equal to I. And third thing you write down, we use adjoint method. Don't worry, I'll explain everything. अगर A inverse exist हो रहा है, if A inverse is existing, then we use, ऐसा आप लिख सकते हो, if A inverse exists, then we use. ठीक है, first thing that we do is A into A inverse is equal to I. Now, if we use this A into A inverse is equal to I, अगर ये identity हम use करते हैं, तो हमें row transformation करना पड़ेगा. We will have to do row transformation. Why? Recollect, last time we have done A into B is equal to C. To B is equal to C. If B is unknown, then we are going to use row transformation. And if A is unknown, then we are going to use column transformation. तो इसमें A inverse का position देखो आप, A inverse unknown है, तो हमें row transformation use करना पड़ेगा. And the second point, A inverse into A is equal to I. अगर ये वाला part, second वाला step लेंगे, तो हमें column transformation use करना पड़ेगा. Column transformation to be used. और जो third method है, that is called as adjoint method, inverse by adjoint method. So first we will be learning these two methods, row transformation and column transformation, because you know last lecture also we have done problem based on row transformation and column transformation. So let us first see how to find out A inverse by using row transformation as well as column transformation. पहले row transformation, column transformation देखेंगे और फिर उसके बाद हम adjoint method पे जाएंगे. But there are three methods to find out inverse. चलो, please note down, then we'll move ahead. Okay, so please write down the heading type 3. Find the inverse of the following matrix by using elementary transformations. Now, elementary transformation means what? Either row transformation or column transformation, whatever is mentioned. Okay, so write down. Let us move on to unit number 5. Okay, unit 5 का लिखो question number 1, first question. Okay, now there is a given matrix. In the first row it is 5 and 4, and in the second row it is 4 and 3. ऐसा दिया है. Right on, first question. Now, if this question is asked, it's a 2x2 matrix. If this question is asked, this is going to carry 2 marks in exam. Okay, लिखो solution. Now, always what we do, first step, consider the given matrix as A. ठीक है, तो लिखो consider A is equal to, let's consider this given matrix as A. इसका first row है 5, 4 and second row है 4, 3. ठीक है, first step, always consider the given matrix as capital A only. Now, second step immediately means we are supposed to find out the value of the determinant. So लिखो, therefore determinant of A is equal to, determinant का symbol डालो, and these matrix entries we write down in form of a determinant. ठीक है, we have done this in 11th standard, finding out the matrix is singular or non-singular. ठीक है, so what is the value of the determinant? -1. Yes, absolutely, it's -1. Value of the determinant is -1. 15 minus 16, cross multiply with a negative sign in between, we all know. ठीक है, अभी हमने ऑब्जर्व किया कि determinant of A का वैल्यू इज -1 which is not equal to 0. तो लिखो, ऐसा लिखो on the next line, since determinant of A
is not equal to 0, since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. Since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. Okay, now since A inverse is existing, obviously we now find out, we want to step number 2, and now we find out A inverse. अच्छा, now it is given elementary transformations. ठीक है, अब ये जो first example है, this first example is to be done by row transformation. ऐसा करते हैं, it's given in the question. Let us do the first example by using row transformation. Okay, A inverse exist हो रहा है. Now write down on the next line, लिखो we know that, ऐसा लिखो, short form for we know that, WKT, we know that. अच्छा, now which transformation is to be used, students? Row transformation. तो row transformation use करने के लिए हम क्या करेंगे? Write down A into, we know that A into A inverse is equal to I. We know that A into A inverse is equal to I. Okay, now we will be using this. A inverse हमें find करना है, ठीक है ना? So now matrix A is already known to us. So let us proceed ahead. We'll be using this. Okay, please do remember, students, I tell you in the beginning itself, जब भी हम row transformation करेंगे तो A into A inverse is equal to I use करना है. जब भी हम column transformation करेंगे तब हमें A inverse into A is equal to I का use करना है. Don't mix them up. एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये यूज करना है आइडेंटिटी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त ये करना है. यू कैन इंटरचेंज देम, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस इज रॉन्ग. व्हाइल डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन डू दिस, एंड व्हाइल डूइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन डू दिस. ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है. ठीक है, we have seen multiplication of matrices last time. उसमें rules आपको लिख के दिए. There are 2 rules to be followed if you recollect, you know. चलो, so let us follow this correct rule. Okay, now let us write down matrix A. चलो, I'll continue it over there so that you can see it very easily. A into A inverse is equal to I. जरा मैं यहाँ पे continue करता हूँ. Okay, just give me a minute. चलो, let's continue it out over here. So A into A inverse. ठीक है, matrix A is given as, देखो, 5 4 in the first row, 4 3 in the second row. A into A inverse is equal to I. 1 0 0 1. ऐसे तो किया था हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम. A into B मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन, A into B is equal to C. A into B is equal to C. इंस्टेड ऑफ B, B के जगह पे यहाँ पे A inverse लिखा गया है. That's it. Now what does the working rule says for solving the problem? कि इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स A है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, जहाँ पे 5 है, मीन्स एट द पोजिशन ऑफ A11 we need 1. So can anyone tell me what transformation should be done to get 1 over here? R1 minus R2. R2. Exactly, very good. Both of you are correct. So देखो, R1 changes when we do R1 minus R2. Very good. Write down. We have done it last time. Very simple. जो last time किया वही कर रहे हैं, खाली अभी A inverse उसका नाम हो गया. A into B is equal to C लिखते थे. If you recollect, A into B is equal to C लिखते थे. It's same thing. ठीक है, तो चलो, let us do R1 changes when we do R1 minus R2. तो R1 changes, row number 1 change होने वाला है, row number 2 is going to remain the same, into A inverse is going to remain the same, और right hand side पे भी second row unaffected रहेगा. Row number 1 changes, R1 minus R2, 5 minus 4 1, 4 minus 3, ये भी 1. राइट हैंड साइड पे भी चेंजेस करने हैं. प्लीज डू नॉट फॉरगेट द राइट हैंड साइड, ऐसा जगह छोड़ के रखने का, और राइट हैंड साइड पे भी चेंजेस करने का. R1 minus R2, so this will be 1,
and 0 minus 1, so this will be -1. Please do not forget the right hand side. रॉन्ग हो जाएगा प्रॉब्लम पूरा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 हो गया. नाउ एट द पोजीशन ऑफ A21 के जगह पे हमें 0 चाहिए. रिकलेक्ट व्हेन वी आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट वंस एंड जीरोस कॉलम वाइज. ठीक है ना. तो नाउ हाउ डू आई गेट 0 एट द प्लेस ऑफ 4? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? R2 minus 4 R1. Very good, correct. Put it down. R2 changes when we do R2 minus 4 times of R1. ठीक है, ones and zeros. How? Arrow आप याद रखो, arrow sign. इसको 1 करने का, फिर नीचे वाले को 0 करने का. ठीक है, इसको 1 किया, फिर इसको 0 करने का, फिर उसके बाद ये वाले को 1 करने का और फिर ये वाले को 0 करने का. This is how we follow the order. Make this 1, then make this 0, then make this 1 and make this 0. ऐसा arrow आप याद रखो. ठीक है, yeah. So let's follow this R2 minus 4 times of R1. Okay, तो क्या होने वाला है? R2 is going to change. Row number 2 change होगा. Row number 1 will remain same. A into A inverse is equal to, ठीक है, 1 and minus 1 will remain same. Now make the changes and write down what you get. ठीक है, तो 4 minus 4 ये 0 हो जाएगा. 3 minus 4 ये -1 हो जाएगा. ठीक है, राइट हैंड साइड, टेल मी व्हाट विल बी राइट हैंड साइड. ये एंट्रीज बताओ मेरे को. समवन. -4 and 5. Correct, absolutely. It is -4 and 5. You know how we are going to do this, you know. आपने homework section भी किया हुआ है and we have learned this last time, so I'm writing it down directly now. Okay, तो चलो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. अभी इसको 1 करना है, जहाँ पे -1 है उसको 1 करना है. तो चलो tell me what should be done. Minus of R2. Yes, absolutely. The second row should be multiplied by -1. तो देखो R2 changes, R2 changes when we do -1 times of R2. मतलब सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो second row changes, R2 changes. So row number 1 is going to remain the same into A inverse is equal to row number 1 is going to remain the same. तो row number 2 change हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 and this will become 4 and this will become -5. Second row -1 से multiply कर दिया. Okay, so I repeat the procedure till here. We have considered the matrix as A. We have found out the value of the determinant. This is to be done always. Determinant of A not equal to 0, hence A inverse exists. अब क्योंकि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो A into A inverse is equal to I हम यूज करेंगे A inverse फाइंड करने के लिए and this procedure is known to us. चलो now one last step is remaining कि इसको हमें 0 करना है, ये जो 1 है. So we all know what is to be done next. Okay, chalo write down. Let's do it together. Let's finish this off. Okay, so I just rub this off so that there is no confusion. Okay, तो अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा? We know that R1 changes when we do R1 minus R2. ठीक है, R1 minus R2 करना है. So R1 changes. So row number 2 is going to remain the same into A inverse is equal to right hand side ka row number 2 is going to remain the same. And when we do finally simplify, so R1 1 minus 0 ये 1 ही रहेगा. 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा. 1 minus 4 minus 3
नाउ प्लीज डू इट केयरफुली विद द साइन. ओके, ये देखो R1 का एंट्री -1 है, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो -1 + 5 इज +4. -1 + 5 इज +4. प्लीज बी केयरफुल ऑफ द साइंस. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो डायरेक्ट करने को मत जाओ. डू इट, शो द स्टेप्स. R1 का एंट्री क्या है? -1 माइनस R2 का करस्पॉन्डिंग एंट्री इज -5. तो -1 + 5 इज नथिंग बट +4. ऐसा करके देखने का साइड में रफ वर्क, क्योंकि अगर ये एंट्री रॉन्ग हो गया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. इन थियरी एग्जाम स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, चलो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. ये मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. तो देखो देयरफॉर I into A inverse is equal to -3 4 in the first row, 4 - 5 in the second row. Therefore I into A inverse is A inverse, recollect, any matrix multiplied to identity matrix, or identity matrix multiplied to any matrix gives us the matrix itself. Rule says so A inverse is equal to, this is the final answer. That's it, problem is over. Okay, please check. This is our final answer and A inverse. Please just go through it carefully. Very important procedure. A inverse वाले problem बहुत important है. Now, quickly recollect, how do we find out whether the answer that we have obtained is right or wrong? कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो आंसर आया A inverse, इसमें कुछ गलत है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? Now we know कि A into A inverse is equal to I ना. मतलब अगर मैट्रिक्स A और उसके इनवर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, इट इज कॉल्ड एज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इट इज कॉल्ड एज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. तो चलो देख लेते हैं. लेट्स वेरीफाई. डू नॉट राइट डाउन, जस्ट हैव अ लुक. ओके ओके, ये एक्स्ट्रा है. द थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इज एक्स्ट्रा फॉर योर रेफरेंस. अब देखो मैट्रिक्स ए हमें क्या दिया था? मैट्रिक्स ए वाज 5 4 in the first row, 4 3 in the second row. अच्छा, A inverse हमें क्या मिला? A inverse is -3 4 4 and -5. तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, देन तो आंसर इज ओके. ठीक है. नाउ हाउ डू वी डू? रो टू द कॉलम. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट कॉलम. तो रो को उठाने का कॉलम के ऊपर रखने का. तो -15 + 16, -15 + 16 is 1. Now first row to the second column, 1 2 वाला position चाहिए. First row to the second column. So 5 4s are 20. Pick up the row, place it on the column. 5 4s are 20. 20 - 20 0. बराबर है, करेक्ट. अभी सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, 2 1. सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, -12 + 12 0. सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम, तो 16 - 15 1. बराबर है. मतलब जो A इनवर्स हमें मिला, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. अगर ये A इनवर्स में कुछ गड़बड़ होता ना, तो राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलता. तो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई whether the inverse that we have obtained is right or wrong. I hope this procedure is understood till here, everyone. Just respond once. Yes, sir. Okay, thank you very much. हाँ, very good. ये just extra है. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करके देखने का. Otherwise not required. हमारा आंसर यहीं तक आके खत्म हो जाता है. तो इट्स अ 2 मार्क एग्जाम्पल. आपको लेंदियर लग रहा होगा, आप बोलोगे सर 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल, तो प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो एग्जाम्पल. ओके, चलो प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.